The end is coming. It's going to be end of an old era, and this will begin the new era of Bitcoin. As per the famous businessman author Robert Kiyosaki, the collapse will begin 2023 January. The reason I will tell in this video, but before that, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. साथ ही साथ ये भी बोलूंगा in this crash, how we going to save ourselves is going to be like we will be the only one who will smiling. So आज के इस वीडियो में cause and साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा to save ourselves from this winter. So stick to this video till the very end. Like this video, subscribe this channel if you want to learn something new every single day. Be a part of our Twitter and Telegram जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. So let's get forward. So कल के वीडियो में I have already updated all the technical datas, all the on-chain datas, everything you need to know related to inside of Bitcoin. If you are still looking for, to get involved in this market, if you are still looking for the best time to get involved, just go down below. You will get the video link. आज के वीडियो के एंड पे भी मैं कल का वीडियो का लिंक डाल दूंगा. So check that video. That is a must-watch video for all the cryptocurrency Bitcoin believers. So recently, for the Fed interest rate hike, US dollar is dominating the fiat currency market. But why the hell this Mr. Robert Kiyosaki, not only Robert Kiyosaki, बहुत सारे analyst, economist, why they are predicting कि US dollar is in a verge of collapse. मतलब ये कभी भी collapse हो सकता है. क्यों? जबकि इतना ज्यादा एक अच्छा बुल रन चल रहा है, क्यों सब ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये गिरने वाला है. So उससे पहले just take a look. Recently, US dollar is up by 18.24% against GBP, Great Britain Pound, जिसको हम बोलते हैं स्टर्लिंग. It's up by 15.54% against Euro and 23.33% against Japanese Yen. And we all know last 12 months pe, the entire cryptocurrency market is down by more than 60 to 65%. So now, after this dominating US dollar rally, why everyone is predicting US dollar will crash? So the reason is, first of all, Federation, US Fed, कभी भी long time तक ये interest rate hike नहीं कर सकता है. फर्स्ट रीजन वी ऑलरेडी नो, ये इंटरेस्ट रेट हाई के चलते एक रिसेशन पे ऑलरेडी यूएस है, और ये इंटरेस्ट रेट अगर और ज्यादा दिन तक चलेगा देन डेकेड वर्स्ट, लाइक लास्ट 100 इयर्स का वर्स्ट रिसेशन आने वाला है अगर ऐसे ही इंटरेस्ट रेट हाई चलते गया तो. बट स्टिल एनालिस्ट आर बिलीविंग कि आज से 30-40 इयर्स पहले तक भी कभी भी इंटरेस्ट रेट नहीं गिरा था. सो इंटरेस्ट रेट हाई होने के बाद भी राइट नाउ इट्स स्टैंडिंग अराउंड 3.24%. आज से 40 साल पहले ये 3.24% वाज बिलो नॉर्मल. 5%, 6% यूज्ड टू बी नॉर्मल. बट सिंस दिस कोविड पैंडेमिक, यूएस गवर्नमेंट ने लास्ट 50 इयर्स से 100 इयर्स का सबसे ज्यादा पैसा प्रिंट किया है. एंड ये पैसा प्रिंट करने के चलते लोगों के पास अभी फ्री पैसा है. तो ये जो एक लालच, ये जो एक खून जो लग चुका है, उसी के चलते ये 3.24% इज फीलिंग लाइक इट्स अ लॉट. बट इन रियलिटी दिस इज नथिंग इफ इट वाज 30-40 इयर्स बैक. बट नाउ मुद्दे की बात है, यूएस फेड ने जो ये इंटरेस्ट रेट हाइक करना स्टार्ट किया है, ये ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाला है. सिंस रशिया सारे के सारे ऑयल का, सारे के सारे नेचुरल गैस का कनेक्शन कट कर दिया है, उसके चलते यूरोप में टैक्स हाई कर दिया है. मतलब इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, फूड टैक्स, सारे के सारे टैक्स बहुत ज्यादा हाई कर दिया है, डबल कर दिया है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है. एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी चाहता है कि टैक्स हाई देने के चक्कर में सिटीजन्स उसको कम खर्चा करेगा. तो ये सेम चीज यूएस के साथ भी होने वाला है अगर ऐसे ही इंटरेस्ट रेट हाई होना स्टार्ट कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो एक वर्स्ट रिसेशन होने वाला है. साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट अगर हाई के साथ साथ अगर टैक्स रेट भी हाई हो गया, देन यूएस डॉलर विल स्टार्ट कोलैप्सिंग लाइक जीबीपी, द स्टर्लिंग, द वे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड कोलैप्स्ड आफ्टर दिस रीसेंट टैक्स रेट हाई. सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद यूएस डॉलर. सो यूएस में जब ये टैक्स रेट हाई होना स्टार्ट करेगा, यूएस डॉलर भी कोलैप्स होना स्टार्ट करेगा. अगर यूएस डॉलर कोलैप्स होना स्टार्ट किया, देन इन्वेस्टर्स कहाँ पे जाएगा? जापानीज येन क्रैश हुआ, यूएस डॉलर पे आया. स्टर्लिंग क्रैश हुआ, यूएस डॉलर पे आया. यूरो क्रैश हुआ, यूएस डॉलर पे आया. नाउ अगर यूएस डॉलर क्रैश होने लगा, देन इन्वेस्टर्स कहाँ जाएगा? देन इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट पुटिंग देयर मनी बैक इनटू स्टॉक्स एंड क्रिप्टोकरेंसी, एंड पेमेंट related cryptocurrencies will be worldwide.
the way Russia is starting, because Russia was the first currency which crashed because of their geopolitical conflicts with Ukraine. वो होने के बाद Russia not only has started their cross-border payment with cryptocurrencies, even they are setting up their main capital stock exchange center to be a cryptocurrency stock exchange center. ये एक बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ इवेंट होने वाला है. So Robert Kiyosaki is telling, जैसे ही US डॉलर ऊपर जाना स्टार्ट किया है, safe havens like gold and silver, they started losing their value. And Bitcoin, which supposed to be the hedge against inflation, since there is very less education on this Bitcoin, people have misunderstood the real power of Bitcoin, the real value of holding Bitcoin. So people will start understanding the legacy, the study behind Bitcoin, the main work behind Bitcoin, and people will start engaging in the Bitcoin. So अगर ये in future और गिरने लगा, इसको और buy करते रहो. This is what Robert Kiyosaki is suggesting. Bitcoin, gold and silver. Buy and hold. By January 23, US dollar will start collapsing. Bitcoin, gold and silver will start rising. So बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, take care. Dev signing off.